any device performs the operation of signal operation, that is called device. And its classification systems means systems mane that is both continuous and discrete time seta kuajibo. System also both continuous as well as discrete. Seti dekho, first write down static and dynamic systems. First likho, first system that performs the operation of signals is called that is the system. A device that performs the operation of signal is called system. Systems classified as both continuous and discrete time. That is first number one, static and dynamic system. Static and dynamic system. Second one, linear and non-linear system. Third one, time variant and time invariant system. Fourth one, causal and non-causal system. Fifth one, stable and unstable system. एथरे तमरा एग्जाम रे बेसी आसे टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट इन एग्जाम टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट बेसी आसे तापर आसे linear and non-linear. Prove that this is linear and non-linear. Prove that this is time variant or invariant. Have you written, all of you? So first or last, first is static and dynamic systems. Static and dynamic system. And second is linear and non-linear system. Third is time variant and invariant. Fourth is causal and non-causal. And fifth is stable and unstable. First one, come to first one. Put arrow mark and write down first one. Static means always it is fixed. Dynamics means it is variable. In DTS is called a static. Static other name also, that is called memoryless system. Static in bracket you should write memoryless. You should write memoryless. Okay. Static means its output at any instant, n, small n, depends on the input samples at that the same time, not in the past or future samples of the input. Future samples of the input. Means static ta kebolo present ro situation upare depend kare. Clear? Simply means DTS is called static or memoryless if its output at any instance, small n, depends on the input samples at the same time. At the same time, that is called static. But not on past or future samples of the past or future upare se mutte depend kare nahi. अच्छा डायनामिक रे कोन होबो से सबुथरे डिपेंड करिवो प्रेजेंट रे भी डिपेंड करिवो पास्ट रे भी डिपेंड करिवो फ्यूचर रे डिपेंड करिवो otherwise in other case the system said to be dynamic or have a memory. Dynamic means have a memory. Have you written? Yes or no? Yes sir. Okay. Then I take an example, give an example of static system. Anybody else? Static system. Y of t equal to x of t. Y of t is equal to x of t, that is in continuous system. Now in discrete system we can say simply y of n is equal to x of n. Another example also we can say y of n is equal to a of xn. A is any arbitrary constant. Okay. Any arbitrary constant.
any arbitrary constant. Okay, then another example of, so yn is equal to a x square n. a to kichhi nahi, mane yn is equal to x square n. Then come to dynamic. Give an example of dynamic system or a memory pool having memory. Sir, y of n equal to x of n plus x of n minus 1. Okay, x of n minus 1. নহলে भी हेई पारे कोन y of n is equal to x n plus x n minus 1 plus x n minus x n plus 1 ताले सब ऊपर डिपेंड कला. देन आसीबा प्रथम सेट टू सेटअप पळेला आ गुटे सिस्टम को जिबा हला. तापर देखो गुटे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम हला. लिनियर नॉन लिनियर काहे की करूनी कहबी हला. कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम एक्चुअली जिते बेले काजुअलिटी जिमती हमें सब हॉस्पिटल ले कोन जो गोटे सिंपली एक्सीडेंट हे गेला वी कैन मूव द काजुअलिटी के तक नहीं जाओ. दैट इज नॉट काजुअलिटी, दैट इज कॉजुअलिटी. बुझी परछ तो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नॉट काजुअलिटी. हमें किंतु कहूछु काजुअलिटी को नहीं जाओ किंतु कॉजुअलिटी किंतु ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल if the output of the system at any time n depends only on present and past inputs, does not depend on future inputs. देखो causality टा सब बळे present और past ऊपर डिपेंड करे. जने एक्सीडेंट हैला तुम देखो हॉस्पिटल को नेलो, causality को नेलो, तो व्हाट इज इट्स सिचुएशन? डॉक्टर देखिला प्रेजेंट सिचुएशन कोन होची, ब्लीडिंग होची, फाटी जाईची, हमको स्टिच दरकार. तापर से कोन करिवो, से प्रेजेंट सिचुएशन देख देला, पास्ट सिचुएशन ला केमती हैला, कोन हैला, कोड हैला, से सिचुएशन को से स्टडी करिवो. नेवर गो फॉर द फ्यूचर. यस सर नो? Yes, sir. That is the actually fundamental example, that is causality. Causality कोंदी. You go for causality. माने प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन को से एनालिसिस करके संगे संगे इंस्टेंट इंजेक्शन दबो. दैट इज काजुअलिटी. सेति हमें कहि दछु कोन काजुअलिटी चल जाओ हैला. देन द सिस्टम, द राइट डाउन डेफिनेशन, राइट डाउन. ए सिस्टम इज सेड टू बी causal if output of the system at any time n depends only present and past inputs, does not depend on future inputs. That is causality. That is causality. Have you written? Output of the system depends on only present and past input. Yes, correct. Does not depend on future inputs. Future input ऊपर कौन सी प्रकार से depend करिवो नहीं. Then you can write the example also, none you write in the function how we can write. देखो हमें कौन करिवो, yn is equal to, write down, yn is equal to f of, माने f means function of square bracket start xn comma xn minus 1 comma xn minus 2, like this square bracket says square bracket says. That is means xn is the present value, xn minus 1 is the past value. The past value. Then next point you write down, if the system depends not only on present and past inputs but also future inputs, then this said to be non-causal. जेते बेले जणे पेशेंट हॉस्पिटल ले पहुंचे, कैजुअलिटी ट्रीटमेंट सरला परे, आर यू लिसनिंग माय पॉइंट? आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ casualty, the patient shifted to the cabin.
Yes or no? In that cabin, sisters are observing the past, present, and also future symptoms. Then they will put the, because I'll put the overdose injection, then he or she will vomit. Then what will happen? And that system is non-causality. See, future ଉପରେ depend करे. କିଛି ଲୋକ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲା ପରେ କଣ କହିଲେ ନା, ଆମେ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆହୁରି କରୋନା ହେଲା. Yes or no? Have you heard this thing? Yes, sir. That is the non-causality of the system. That is the non-causality of the system. Then তাহলে তার एग्जांपल কোন হবো? y of n is equal to function f square bracket start xn comma xn minus 1 comma xn plus 1 মানে সবু রকম রইব, past भी রইব, present भी রইব, future भी রইব. That is the non-causality of the system. Definitely doctor will observe on cancer patients the what মানে that is the completely non-causality of the patients. Acha. Then solve one problem and tell me yn is equal to xn plus 3xn plus 4. 3xn plus 4. 3xn plus 4. Just simply tell me this is causal or non-causal. Sir, xn into 3. xn plus 3xn plus 4. Non-causal, sir. Non-causal. Non-causal, sir. Okay. ଆମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରୁଭ କରିବୁ? n is equal to xn minus plus 1 1 3xn n plus 4. xn plus 3xn plus 4. ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ n is equal to 1 ନେଲୁ, n is equal to 0 ନବ, n is equal to minus 1 ବି ନେଇ ପାରିବୁ. Yes or no? ଏବଂ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଦେଖିବ ଯେ what is the, ଆଉ ଏମିତି ଆମର normally এটা একবার কে क्वेश्चन एक्चुअली normally ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବି ଜାଣି ଦଉଛୁ it is causal or non causal. Yes or no? yes, sir. Yes, sir. बेले बेले परीक्षा रे कोन करे, what is signal na define signal and systems, write the different types of signal and systems hela, and explain each with relevant example. ତାହେଲେ ସେଇଠି ତମକୁ କଣ ହବ, 7 ମାର୍କ ಅಂತರೂ ବେಳೆ ବେಳೆ ପଡିଥାଏ. ବୁଝି ପାରୁଛ? ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିବ, causal, non causal, dynamic, static ସବୁ ଲେଖିବ. Then come to तुमको एटा जेटा परीक्षा पड़े सेठी जिबा, एटा तो पढ़ी दीची. अच्छा, then come to time variant and time invariant. Time variant and time invariant एटा भी तुमको दरकार होची, सेthi ପାଇଁ हेडिंग हला time variant and time invariant. A system is called time invariant if its input output characteristic do not change with time. Input output characteristic do not change with time. First write down, a system is called time invariant if the input output characteristic do not change with time. तुम्हें गोटे सिंपली गोटे देखो, गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दल देखिबा टाइम इनवेरिएंट रो. ट्राई टू functions जो थिबो नहीं फंक्शंस प्रैक्टिकल एग्जांपल कहछि बापा तन्मय. तुमे तो फंक्शन कहि देल तो एमती सेटा कर दे परिबो, एमती टाइम इनवेरिएंट की कोन कहि दे परिबो सेटा तुम जानि छी. एटा भी तुमे ठीक कहउछ, किंतु मु तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल कहै छी. देखो तुम रूम रे तुम
क्लासरूम रे केतरा सीट अछि 60 सीट मिनिमम ताटू अधिक भी थाई पारे तुम्हें 9:30 रे एंट्री कलो 10:30 रे क्लास सरियो यस जति नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ी गले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ी गले तुमको मु सीट आनी की दउची की No, sir. that 60 is fixed that is okay sorry that 60 is fixed okay that 60 is fixed seat is fixed and light is also fixed yes or no Yes, sir. तो टाइम अनुसार लाइट और सीट चेंज हला की मु सीट और लाइट चेंज किंतु जदी कम पिला थिबे आ तुमे से सीट रे कंफर्टेबली बसचो आ लाइट जतकी दवा कथा दउची लाइट तुमको बेटर देखा जाउची तो सेही अनुसार सी चेंज हो माने एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइम हमें इनपुट चेंज लाइट भी चेंज कर परनो सीट भी चेंज कर परनो यस और नो बोले कि देखो Yes, sir. गुटे स्लैब देखो आ गुटे थर गुटे स्लैब ने ओपन सनलाइट रे पड़ी छी प्लेस्ड ऑन ओपन सनलाइट फर्स्ट सकाळे सूर्य किरण पड़िला सनलाइट फॉल्स ऑन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग हैला then 10:30 then 12:30 then 2:30 then 4:30 then 6:30 then what is according to time very the temperature of slab is changing or not changing Change. changing the slab changing jitole hochi slab रे heat jitole changing hochi that is time variant input भी change होची इनपुट किए चेंज हला सकाळे सूर्य किरण कोन पूरा कोन अछि सॉफ्ट सनलाइट कूल ठीक अछि इनपुट चेंज हला आउटपुट कोन से चेंज हला हम सेटा भी कहबा जे हम निज कथा भी कहबा तुम चिंता करो तुम तो सकाळ सकाळ कॉलेज को आसुछो एबे नाउ टुडे जेबे भी आसो मॉर्निंग रे तुम पूरा जैकेट पकड़ पिंधी पूरा एकदम टिप टॉप हे आसीओ जितेबेले 12:30 होची सेतेबेले तुम जैकेट बाहर कर दोछो यस और नो Yes, sir. yes that is the time variant system ओके एबे बुझी परछो ते ताको हमें केमिति प्रूव करिवा ताको हमें केमिति प्रूव करिवा दे एटा परीक्षा पड़े बापा एक 2 मार्क पकी पारे 4 मार्क परी 5 मार्क पकी पारे हैला तो मु जहा लेखुची टिके जहा डॉक्यूमेंट भी टिके लिखि दबो टिके जदी न बुझी परिबो मते लागुची लैब क्लास रे क्लियर हे जबो लैब क्लास टाको तुम लाइटली नियोनी कि लैब क्लास रे मैडम पढौ छ ठीक से भी मोर स्टूडेंट से ठीक से पढौ छ मु लक्ष्य करछि किछि भी असुविधा नै जदी न बुझी परिबो मते कहियो देन देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो लिखि देलो ए सिस्टम इज कॉल्ड इनवेरिएंट इफ इट्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज विथ टाइम लिखि लो Yes, sir. yes part देखिए एरर मार्क देखि लिखो केमिति हमें प्रूव करियो एरर मार्क देखि लिखो delay the input sequence delay the input sequence by k samples delay the input sequence by k samples and find output sequence then methodically we can write sequence code input sequence को delay करूची then y n k माने y n comma k y n k is equal to capital T square bracket as start x n minus k square brackets over ये गुटे पॉइंट एटा कहबी तुम जस्ट वेट
just wait. Sir, outside of the equation. ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଉଛି n comma k yn k okay is equal to capital T square bracket x n minus k x n minus k এটা k samples हम delay करूछु delay the input sequence then input k xn yes or no xn को मतलब delay कर देली तब मैथमेटिकल लिख देली x n minus k yn k is equal to transformation of x n minus k then next error mark देख लिखो delay the output sequence k samples delay the output sequence k samples delay the output sequence k samples that is y n minus k that is y n minus k so, then come to implies yn k means y n comma k yn k is equal to y n minus k that means input signal को तुम्हें k samples delay करिवो एवं आउटपुट सिग्नल को k samples delay करिवो जदि दीटा जाको इक्वल हेबे ताहले the system is time invariant. Are you getting my point? Sir, आउथरे कुछ पूरा माने क्लियरली बुझिया पे चेष्टा करो फर्स्ट तुम्हें गोटे काम करो इनपुट सैंपल को इनपुट सिग्नल को तुम्हें k samples डिले करो डिले मींस n minus k yes or no Yes, sir. then सी जहा हैला ताको गोटे फिक्स रखो then come to delay the output sequence same samples माने k samples उन्हें डिले करो output samples output किए yn ताहले y n minus k that is delay means y n minus k तापरे कोन करिवो जदी y n k माने इनपुट सिग्नल रो डिले जहा हला आउटपुट सिग्नल डिले करे को जदी इक्वल हे गला ताहले दैट इज टाइम इनवेरिएंट टिके रुहो मु गुटे तुमको देखिया पे चेष्टा करूची जस्ट वेट is it visible yes sir Yes, sir. देखो एठी कोन हेची देखो एमती लिखिची y of n x of n x of n minus k equal to y of n minus k the system is time invariant ताले कोन कोला से इनपुट को फर्स्ट k sample डिले कला एंड आउटपुट को k sample डिले कर दला if it's not satisfied the above condition the system is time invariant sometimes linear time invariant discrete system satisfies both the linearity and time invariant properties तो linearity पढाले तापर सेटा जे आसीया कथा आसीबो हला एठी कोन गुटे एग्जांपल देला y of n is equal to first तुमे करो x of n then you tell me whether it is variant or invariant Code sir. suppose yn is equal to xn এটা x of minus n দেইছি লা y of n is equal to x এটা দেইনি এটা দেখো is it visible Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. ये माइनस n देइছি मु तुमको xn कहूची सेटा के प्रूफ करे जे এটা ভেরিয়েন্ট না ইনভেরিয়েন্ট
invariant habo. invariant habo toda So variant habo. toda भी invariant से लिखी जे So n into k and n minus k बोधे. ना सेटा देखो n जब y n के जो लिखी जिंती सिस्टम जिते बड़े xn को डिले करिवो ना ला जिते बड़े xn को डिले करिवो सेते बड़े you have to write in that way सेते में तुम रखोथिल ना ynk is equal to transformation ए जगह t लगा दबो transformation xn minus k ମୁଁ ଟିକେ ସେ open source ଖୋଜୁଛି କେମିତି ସେ ସ୍ୱାଗତିକା ମ୍ୟାଡାମ ଲେଖୁଥିଲେ so that I will write it down सर आगे माने जो माने इनपुट तक आगे डिले कर दो माने आगे इनपुट को डिले करिवो हां तापरे आउटपुट को डिले करिवो मैच कर दो दीटा का भी इक्वल रहबो ताले इनवेरिएंट रहबो इनवेरिएंट रहबो यदि नॉट इक्वल ताले टाइम वैल्यू यदि नॉट इक्वल हो टाइम वेरिएंट एबे एबे बुझलो बुझले जे किंतु प्रॉब्लम तुम होथो हम जानि छी ठीक अछि मतलब तम एक्चुअली दिस वीक आई एम बिजी विथ माय सम एकेडमिक प्रोफेशनल करियर so next week I will take class so tomorrow is the holiday I think then after Thursday I may or may not take the next Tuesday I will take class actually I was busy with my professional okay अच्छा मु गुरुवार दिन क्लास नहीं पारे न नहीं पारे काहे ना मु बहुत एक्चुअली बिजी रहिबे सप्ताह रे आ मैडम तो क्लास नउचंती किंतु लैब क्लास रे मैडम जहा पढौचंती सेटा को ठीक ये करके भल से पढिबो मु दुखित एक्चुअली डीएसपी पूरा मैथमेटिक्स पूरा बढ़िया पाठ किंतु तुमे प्रैक्टिस करनु थो मु जानि छी तुमे चीटिंग करथो जानि छी तुमको जते मैडम न पढिबो सेते पर्यंत तुमे पाठ पढाटा ठीक से ध्यान दबो दैट आई नो ठीक अछि